So point number 5 is that hard work is always rewarded. अब इसके बारे में क्या बोलना है, नो आइडिया. ऑलराइट, सो ये जो है ये बहुत अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है. आई डोंट नो यहाँ तक कितने लोगों ने देखी होगी वीडियो. Hey guys, welcome back to our channel. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट जॉब्स, विच इज़ अगेन बट आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से बात करने वाले हैं. सो हम लोगों को कनाडा आए हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, 2.5 साल के करीब. उसमें मैंने 4 जॉब्स चेंज करी हैं, और एक में से फायर भी हुई हूँ ना, जो चेंज करी है जॉब्स. तो मैंने जॉब छोड़ी भी है बाय द वे. So we'll talk about 5 lies about jobs जो कि नॉट सिर्फ कनाडा के लिए स्पेसिफिक या कनाडा के लिए मैटर करता है बट एवरीवेयर एल्स. So let's get started. So the first point is that people say कि you cannot become wealthy if you have a job. एंड वो रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, बिजनेस जब करते हैं तभी यू कैन मेक मनी. एक्चुअली द पॉइंट इज दैट वी एक्चुअली नो अ लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली हैव डन वेरी वेल इन जॉब्स. द ओनली प्रॉब्लम इज दैट समटाइम्स पीपल आर ओके with their low paying jobs. They just get comfortable with the jobs that they have, and that's the problem. So we should never be comfortable with the salaries that we are getting. We should always strive for more. We should always at least strive to do better than what we are worth. और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि जब हमने अपना पहला घर खरीदा था यहाँ पे, we bought it from our money saved from our salaries. जैसे हम दोनों में से हम एक बंदे की सैलरी पूरी सेव करते हैं और दूसरे से सारी स्पेंडिंग करते हैं. दिस इज वी बीन डूइंग सिंस वी गॉट मैरिड. तो दिस हेल्प्ड अस अ लॉट कि staying below your means in your salary, this will help you become wealthy in your salary. एंड तीसरी चीज़ ये होती है दैट जब वो पैसे सेव होते हैं तो वो सेव एफडीज या उसमें नहीं सेव करना होता. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी पुट इट टुवर्ड्स एसेट्स दैट ग्रो. इट शुड बी स्टॉक्स, इट शुड बी रियल एस्टेट, इट कुड बी क्रिप्टो, एंड यू शुड बैलेंस द पोर्टफोलियो वेरी वेल सो दैट you actually grow not quickly but at least slowly, and by the time you retire you can actually have a lot of money. मैंने बहुत सारी videos grow with NAV channel बनाई है, so do check that a video out. And it doesn't really mean that you need to own a business or you need to be a YouTuber, or all that will accelerate your wealth, yes, but that doesn't mean that every rich or wealthy person has built their wealth through business. Number 2 point is they say that salary is an addiction. सैलरी आती रहती है, बैंक अकाउंट में दिखती रहती है, तो वो दिखना चाहिए. एंड मेरे हिसाब से वो सही नहीं है. एंड द रीज़न वाई आई से दिस इज़ बिकॉज सैलरी इज़ नॉट एन एडिक्शन, बट द थिंग्स दैट वी बाय फ्रॉम दैट सैलरी, जैसे सैलरी इंक्रीज होती है तो हम बड़ा घर खरीद लेते हैं. $200,000 सैलरी हुई, 1.5 मिलियन का घर खरीद लिया और हमने एक हाथी पाल लिया. क्योंकि जो देन यू कांट लीव योर जॉब, राइट. एडिक्शन क्यों बोलते हैं कि जब हमें जॉब छोड़नी होती है, हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, एंड बिकॉज वी हैव सो मेनी लाइबिलिटीज़, एंड व्हेन आई से लाइबिलिटीज़, हाउस इज़ नॉट अ लाइबिलिटी बट वी हैव सो मेनी ऑब्लिगेशंस, कि हमने बड़ा घर खरीदा हुआ है, बड़ी गाड़ी है, इतने सारे लोन हैं, एंड देन वी कांट एक्चुअली लीव आवर जॉब. सो इट्स नॉट अबाउट द एडिक्शन, इट्स अबाउट बाइंग सो मच स्टफ that you cannot afford to lose that salary, and that's what causes that addiction. It's the things that we buy when our salary increases and not the salary itself that's an addiction. So when we decided that Navjot will leave his job, अब सैलरी आती कि इसको अकाउंट में अच्छी नहीं लगती है, बट इवन when we were earning well, we made sure that we were अपने सारे खर्चे वर बिलो आर मीन्स. तभी हमने जो कॉन्डो था वो बहुत सस्ता खरीदा था, 420,000 का. We could afford more, but we went for a lesser price condo. एंड तब हमारे खर्चे जो थे वो $5,000 थे सिर्फ जब मैंने जॉब छोड़ी थी. अब बढ़ गए हैं, बट आई एम ऑल्सो अर्निंग मोर. बट वो जो पाथ था ना क्रॉस करने वाला टू लीव योर जॉब एंड देन स्टार्ट अ बिजनेस, दैट वाज ओनली पॉसिबल व्हेन आवर एक्सपेंसेस वर वेरी लो, इवन इफ वी वर मेकिंग मोर मनी. अब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे ट्रेस पासिंग करके जाएंगे कहाँ लोग. अरे किसी का घर होगा ना. कहाँ घर है? पार्क है ये तो. नहीं, तुझे देखने से लगे थोड़ी किसी का घर नहीं है.
अब बहुत सारे लोग बोलते हैं that there are no jobs in Canada, which is I think one of the biggest lies. There are a lot of jobs. मैं IT में हूँ, and even in Navjot's profile also, you just have to look a little bit harder. You have to network, you have to do, emails, you have to connect with people on LinkedIn. Just do that. एंड गाइस, हर जॉब प्रोफाइल का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है. जैसे मैं जब मार्केट रिसर्च में आया था और मेरे को लग रहा था कि कोई जॉब नहीं है, ठीक है पैंडेमिक था, सब कुछ था, बट मैं ब्लेम कर रहा था पैंडेमिक को, ये मैंने बहुत बार बोला है. बट देन आई गॉट इनटू दैट व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें 250 लोग हैं इन मार्केट रिसर्च एंड दे रिप्रेजेंट 200 कंपनीज. तो मेरे को कल भी अगर जॉब चाहिए तो मेरे को मिल जाएगी. क्यों? क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप वेयर देर आर 250 अदर मार्केट रिसर्चर्स विच आर इन माई प्रोफाइल, राइट? सो try to network as much as possible because there's a WhatsApp group in your profession that will actually get you a job. So jobs बहुत है मार्केट के अंदर. आपने बहुत लेबर मार्केट रिपोर्ट्स देखी होंगी कनाडा में that there's such a shortage of a lot of different profiles. Yes, there are certain industries जहाँ पे jobs इतनी कम है, और मैं ये बहुत बार फर्स्ट जॉब एक्सेलरेटर में भी बात करता हूँ कि you should always try to target industries that are actually doing well in Canada, and that's the most important thing. So jobs की कमी नहीं है. अगर कोई ऐसा आपको बोल रहा है तो बिल्कुल गलत बोल रहा है, and we'll talk about that in our next video as well, जहाँ पे we have actually invited someone who actually got a job without a PR sitting in India, and now he's coming here and he has been working in that company for 7 months. अब PR हो चुका है, now he's coming here, so it's completely possible, and he's not from IT. So we'll talk about that in the next video. But jobs बहुत ज़्यादा हैं कनाडा के अंदर. अभी ना हम लिपि और अरविंद से मिले. इफ़ लिपि एंड अरविंद यू आर वॉचिंग, इट वॉज लवली मीटिंग यू. एंड हमें जो अभी पीछे पॉइंट बात कर रहे थे ना कि जॉब्स यहाँ पे हैं, जॉब्स मिल जाती हैं, एंड दे केम ऑन वर्क परमिट, दे डिड नॉट गेट अ PR, एंड कंपनी के थ्रू वर्क परमिट पे आए, एंड नाउ द वाइफ विच इज़ लिपि, शी हैज़ कम हेयर ऑन डिपेंडेंट वीज़ा, एंड शी विल ऑल्सो गेट अ वर्क परमिट. सो इट्स ऑल पॉसिबल, राइट? तो लोग इंडिया से यहाँ पे आ रहे हैं बिना PR के, बिना किसी चीज़ के, वर्क परमिट पे, एंड देन दे आर मेकिंग इट हैपन. सो इट्स ऑल पॉसिबल. Number 4 point is, staying in a company for too short is stupid. अब मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, किसी और का नहीं. मेरी फर्स्ट कंपनी, माई फर्स्ट जॉब वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब विच आई वर्क फॉर 3 months बिकॉज नए नए यहाँ आए थे, कोविड था, कुछ और ऑप्शन नहीं थी, सो आई टुक दैट जॉब. My next job, I worked for almost 6 months, but then the company shut down and I was also not enjoying it. I was glad that that's over. My next company, I almost worked there for a year. The first 6 months were amazing. I was learning so much, but the last 6 months were actually very bad. And So one of the reasons decision- was, companies की भी situations change हो जाती हैं, right? So her company was acquired by another company, and उसकी वजह से management change हो गई, सब कुछ हो गया, so she stopped enjoying it. Oh yeah. Like the people I joined, I was working with, they were no longer in the company, and made sense to move to my next role. And in my current role, there are people who have worked in the company together for almost more than 8 years, which sounds weird to me, but then वही है कि job satisfaction, learning हो रही है, you're enjoying your role, so it stays. And it's very important, right? For example, in Simran's case, it's really important for her to have a balance of 3 things, and this is true for everyone. One of my mentors actually used to say this, mere mama ji, he used to say that there are 3 things that are important in when you are doing a job, and if those 3 things are not met, you can actually leave the job, whether it's 6 months or 1 year. अब ये चीज़ें कौन सी होती हैं? एक होती है learning, so you are continuously learning in your job, and that's very important. The second thing that you need to balance is contribution. You need to be contributing to a role, and if you are contributing to that company, that's very important. And the third thing is you should be enjoying. अब enjoyment कई बार salary से आती है, but salary की जो enjoyment होती है ना, वो short lived होती है. वो सिर्फ 1-2 दिन अच्छी लगती है. जब salary आती है, अब सिमरन की salary बहुत ज़्यादा, हमें बड़ा मज़ा आता है जब बैंक बैलेंस दिखता है, but that's short lived, right? You can't continue to be earning more money and then be miserable in a job. So ये जो 3 चीज़ें हैं ना, learning, contribution and enjoyment, इसका balance बहुत important होता है. And if you have at least 2 out of 3 things, you can still continue to do the job. But I think for us, all me, 3 things are important. 3 things are important. Yes. And it's fine. And ये दूसरा भी जो flip point है ना, that कई लोग कहते हैं कि staying in a company for too long is also bad. ये भी कोई बेकार बात है. अगर तीनों चीज़ें मिल रही हैं हमें तो क्या फ़र्क पड़ता है? But yes, you should not be slumbered into complacent नहीं होना.
और कंफर्ट कि जोन में चल नहीं रहा है जाना तो कि चलता चल रहा है, कौन मेहनत करेगा, कौन इंटरव्यू देगा। जब ऐसा वाला चीज़ होनी शुरू होती है, एंड यू विल नो जब ऐसा हो रहा होगा। मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं एक कंपनी में 8.5 साल से काम कर रहा था, लास्ट के 1.5 साल आई वॉज मिजरेबल, नॉट बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट कंपनी, बिकॉज आई वॉज नॉट लर्निंग। सो ये सब चीज़ें ना समझ आनी शुरू हो जाती हैं, बट ये शॉर्ट लॉन्ग वाला कुछ नहीं है। 3 चीज़ें मिल रही हैं तो बढ़िया है, नहीं मिल रही तो मूव ऑन। So point number 5 is that hard work is always rewarded. अब इसके बारे में क्या बोलना है, no idea. क्योंकि I think hard work is always rewarded. अभी मैं सिमरन को बताता हूँ कि हार्ड वर्क कैसे रिवॉर्ड नहीं होता। हमेशा होता क्या है कि जब हम यहाँ पे आते हैं, मेहनत सब करते हैं, राइट। कुछ लोग मिनिमम वेज के लिए मेहनत करते हैं, कुछ लोग उतनी मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? एंड देयर इज़ अ वेरी सिंपल रीज़न फॉर दिस, एंड ये मैंने बहुत मेहनत करने के बाद रियलाइज़ करा है, बहुत सारी गलतियाँ करने के बाद रियलाइज़ करा है, दैट देयर आर 3 थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड। एक होता है हार्ड वर्क, कि हम मेहनत कर रहे हैं, बट वो हार्ड वर्क अगर डायरेक्शन लेस होती है ना, देन वी एक्चुअली डोंट मेक एनी मनी। सो फॉर इंस्टेंस देयर आर 3 थिंग्स, अगेन मैं ना ये मॉडल्स में बड़ा बिलीव करता हूँ, देयर आर 3 थिंग्स दैट यू शुड हैव अ बैलेंस ऑन। वन इज़ यू आर वर्किंग हार्ड, द अदर वन इज़ दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट यू आर गुड एट। जैसे मैं, आई एम गुड एट रिसर्च, आई एम गुड एट फाइनेंस, आई एम गुड विद नंबर्स, and I married this with something that I actually like. I thought you married me. But I actually like real estate, I actually like investing, and that's where I wanted to focus my energies. I actually like talking to you guys, I actually like talking to people, and that's where I married Simran, but also became a mortgage agent. And I've earned more money in the last 1 year than I ever earned, like 3-4 years taken together, to be honest. And that's the reason why I'm able to do that, because I was able to find the balance. And Simran already had that balance, and that's why Simran को नहीं पता था इस point में क्या बोलना है. Hardly, now it makes sense what you're saying. It makes sense. नहीं. Alright, so ये जो है ये बहुत underrated concept है. I don't know यहाँ तक कितने लोगों ने देखी होगी वीडियो, but if you are able to find something that you like, marry it with, not your wife, but marry it with something that you are actually good at, and then work hard on all these 2 things, then you will actually, I think, become very successful. Yes, and I married him. That's all we have for today. I hope you really liked this video. If you liked it, share it with your friends and like the video as well. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।